Assalamu alaikum dear students. Ajik इस वीडियो अत करो डिस्कस डेटा स्ट्रक्चर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर चूंकि डेटा स्ट्रक्चर पे वो मे कि डेटा स्ट्रक्चर mainly of two types linear data structures and non-linear data structures तो linear data structure मज वो मे array linked list stack queue तो पकमिस वीडियो मज पे linear data structure मज arrays तो array क्या गो array में representation in memory कितने गसान initialization कितने गसान operation various operations which can be performed on an array किंतु करे ऐसे तो insertion in array deletion from array searching in array travels in array तम यम last videos तिमन मुझ कर ऐसे तम तो आज युस ऐसे no ब्याक topic आप ब्याक data structure सु stack data structure stack 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 data structure actually क्या data structure stack data structure data stack data structure ये linear data structure stack is the linear data structure in which the elements are inserted and deleted only from one end. Go state the linear data structure. Yethan elements delete या insert करें खाली एक end किन्ह. That means ये इस array पर ताकि इस करें insertion at any position, deletion from any position. कुंती जाए कौन सी element है का उस delete करें. कुंती end किन्ह है का उस delete करें. इसे का from last end किन्ह करें delete beginning किन्ह array किन्ह या सही delete करें. In linear data in array data structures. That means in arrays random access was possible. In arrays random access is possible. We can access any location of an array randomly. उसमें कुंती location पे randomly गया with time composite of O of 1. उसको कुंती location पे randomly गया in arrays. So access करे या तो आपका operation करे. तो while there is linked list, sequential access one after the other. Sequential access is possible. So you stack join, limited access. Go, limited access is possible in stack data structure. So what is a stack? A stack is a linear data structure in which the elements are inserted and deleted into and from their stack only from one end. Aki and kinches karan element delete या insert कथम stacks go you linear data structure तो ये तो मानवा कि इस rule छु अनु stack it follows some rules के rule im afman छि stack के principles ventos या rule ventos या principle ventos there are some principles of stack अच्छी क्या principles क्या सी principles गोन्याती छु ये yes deletion गसान छि या deletion या insertion गसान छे of elements क्योंकि such a गसान from top of stack that is only from one end okay end किंचे गसान ऐसे एकी side इशत गसान entry the exit point such a aqua end कथमस stacks मस that means the deletion and we can insert as well as delete element from one end and that end is called top of the stack. That is on top of the stack. Chunki isu aju ki video chu apn parano actual representation of the stack ke actual implementation parano and iske is par apn logical representation of the stack. Logically kitken change represent kara stack. Logical representation of the stack will be discussed in this video and the actual representation of stack karos in next videos. मतलब इसका हम करो implementation of the stack by using arrays and by using the linked list that will be discussed in coming videos. Okay, so today we are going to discuss the logical representation of the stack, theoretical part of the stack. This theoretical part of stack so karos this coding part of the stack code का actual implementation so karos next videos. Okay, go बाहर एक example for example बिल्कुल इस स्टेक example से करना कोशिश logical representation जो स्टेक की है that is
this. It can logically. This is a container. They mean this is a container. This is a container. Yet means this is a logical representation of the stake. For example, as a container, as a stake, as a data structure, this is a logical representation of the stake. It is a container. And the index of this stake starts from 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Go size by that stake is which is 5. 8, 2, 3, 4, 5, 6. No, sorry, 6. Go size of the stake to me 6. The basic funda kya chhi basic principle kya chhi stake ko such ki back insert to delete create element. For example, you should make this khali union. You make khali karmat memory allocate. Memory allocation. This is empty stake. Kya chi yakun chunu value kihin. That means me won Yousuf Sir stake chu achis karan insert element. We are going to insert and delete element only from one end. That is the top of the stake. Ushi peti kin hakan after the element, peti kin hakan kredit the element. At this side. Go entry the exit point. So up end. Got stake smooth. For example, chunke stake chunk is empty. Agar by sans apne traun ke count the data. For example, I want to store 2. I want to insert element 2. But this is 2 apne. Go yel by 2 traun so what is location pad. So why did yes location pad. Agar मैं 2 च कारण go use यहाँ पर तो वापस मैं कारण अब यहाँ पर है ना बकेट क्या. Go that means the deletion as well as insertion takes place only from one end. We can insert as well as delete the element in the stake only from one end. This is the first principle of the stack. And that end is called top of the stake. Take you balance now here. Because top kinches karan, top of the stake. So that end is one top. For example, status. Initially, you have the stake bananchu. Stake is memory rakanchi. Define karan stack. This is a stack. Define karanchu. Initially, it's on top -1. That means this top is an empty stake asanchu. You see top chu is on -1. -1 means 0 for boom. Because well is 0 so plus greater than 1. The greater than 0 you must not just minus. That means top chu on hitness captain -1 and boom. Which assume karan ki top chu on at initially it is -1. Top is -1. Top chasan -1. That means you see top chasan 0 bone. Because we want to insert the element. For example, element traun. Where element traun go 2. We want to insert the element 2 in there. So first of all, we have to increment this top to 1 by 1. We have to increment this top variable by 1. You should increment for round. We should element top kiniyot. Because top should I bone kaitana. She empty stack. Empty stack मतलब वो -1. It's khali. Go top just don't go on 0 to location पर. That means top was -1. Top का was ++. That means ++ ही मतलब वो -1 का was +1. Law क्या में से one more other in such as operators पर. ताकि वो में ++ is कम भी है. Last is value आसानचु. So can increment by 1. क्योंकि value was -1 तास करो increment +1 -1 so 0. Go top what is getness. Go first of all, what we have to do, we have to increment the top variable by 1. As current top variable by 1. Then we can insert the element in. Path insert 2. Okay. Are you getting? For example, next time I want to insert 3. Then we like to arc element but just track when insert. But just track element. Go first of all, we get a top variable chassis. Next current count top cargo increment 1, top cargo ++. Go in the ++, pull your 0, 0 + 1 cap in 1, top what the path cargo and path insert 3. Okay. It's like in a top. Gotcha. I'm path super coming insert atmos. Top gets ++, go top what gitness, path gets 4, path just 5 current, for example, atmos. 5 top got goodness, path gets 5, top gets goodness increment 6, and top was goodness, path gets 7. Go, first of all, when I have to insert the element into the stake, first of all, what we have to do, we have to increment
the top variable by 1. Tikyazi achi godet karan pevan top variable karan 1. Tikyazi wuchu agar me yetnas karyo win top or yetnas -1 starters. Okay. Agar me kar kam ati me kar plus ya me 0 yetnas 2. Agar me get traw ati element. Agar ba ati kar insert element. You should throw an element you gasi overwritten. You gasi delete. Koi me gasi lost information. This case is zaruri top variable nun gore dekh this location pe. And patching top variable nun yet pat karan element. Pat karan increment dekh location पे पास करने element पास करने देख सकते या location पास करने element तो तब में ये कौन कारण जितना में top full का सांचू that means जितना में top पाता हूँ size 6 go size go मतलब top part में size -1 so go 5 क्या है 6 है size तो size -1 go 5 तो क्या है 5 क्या है उस कारण index start from 0 0 1 2 3 4 5 that means 6 elements तो this process of inserting element from the top of the stack is called push operation. यह process क्योंकि element आपको insert करें क्या ये गोडनेस यह principle rule of insertion deletion से करसान from only one तो क्या है मैं को insert element from top गोड को मैं top पर पास करूँ या top variable पास करूँ या top पर ये तो अगर ये तो उसमें element में ये तो स्क्रीन अगर मैं लोकेशन और 4 फॉर एग्जांपल बदन या साहब बका लोकेशन 1 2 0 पर ये तो अगर 2 पर मैं टॉप इनकेस बया सा के बका 0 I cannot do this operation बा हकने ये कर ये ऑपरेशन एकनस के तिकाज अच रूल यो है फंडा छ यो है कि युस असा इंसर्शन ते डिलीशन से गसन सच गसन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिटी पे टॉप की नीचे से गसन गो एट द एंड से गसन गो ये तो तय होता मैक्सिमम साइज पर तो दिस प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट पुटिंग एलिमेंट into the stack is called push operation. These are the operations. क्या चूंकि कौन सी डाटा स्ट्रक्चर इस बनावन छ इसे एम मूजूब आसान कि उससे को ताक पर एफिशिएंटली कौन सी ऑपरेशन कर इंसर्शन डिलीशन डिस्प्ले या कंपैरिजन ट्रैवल सर सर्चिंग ये ऑपरेशन दिमस करान छ सह को इजीली कर तो yes the operation the process of inserting element into the stack is called push operation but there are two operations basic operation that can be performed on the stack zishin kya basic one mein क्या जी इसको वारे ऑपरेशन आस्पेक्ट इसको सर्चिंग कर स्टेक इसको मैक्सिमम एलिमेंट इन द स्टेक सर्च कर छोड़ इसको मिनिमम एलिमेंट स्टेक इसको इज एम्प्टी छकिन नछु ये छ खाली छ स्टेक इन किहिन छन या से फुल छकिन किहिन छन डिस्प्ले हको एलिमेंट द लास्ट एलिमेंट हको रिट्रीव कर so we can perform a lot of operations on the stack but the basic operations the two basic operations are push and pop operation pop should log so there are two basic operations that can be performed on a stack. Basic operation. First one is the push operation. What is the push operation? The process of inserting element into the stack is called push operation. The operation by which we can insert element into the stack. We can add element into the stack. In other words, क्योंकि इसमें 3 को पातनुम 4 देखो ऐड है पातनुम 5 पे ऐड करना था अगर खुला इंसर्ट करना that is called a push operation go push operation क्या गो so operation ये सिर्फ element add करांची या push करांची का मतलब stack इसकी मगर कम साइड from the top of the stack top की नीचे हकानेस push कर तो pop क्या गो when what is pop operation which pop operation is the process of deleting element from the stack the operation by which we can delete element from the stack yeah the operation by which we can remove element from the stack this operation is used for removing element from the stack वो pop operation क्या है pop switches करा remove element मगर कुछ top most element क्या है अच्छी वन मुझे top की नहीं होता है push टिक अच्छी pop टिक ऐसा क्योंकि विंकेट स्ट्रेस element at position 5 is full 7 पर यदि मैं element remove करूँ चुन मैं इसका वो 7 element I cannot remove element 6 until and unless 7 will be removed तो तय हकने बस 6 के रिमूव की हैं जितना में टॉप वाली जितना चाहिए उतना बस 7 रिमूव कर कितके वो गोन्यासी what is a stack of principle of a stack is a data structure a linear data structure in which the order listed was one in which the elements in which the deletion and the insertion takes place only from one end that is the top end that is the top end and the process of inserting element into the stack and the operation by which we can
insert element into the stack, we can add element into the stack, is called push operation. And the process of removing element from the stack, remove karnas is one pop operation. Okay. So dashway chikasan from the top end of the stack. So you can bahag push one और तय एलिमेंट में आखिर गई क्योंकि नॉन एलिमेंट में आखिर बना के तस क्या फंक्शन ये मैं आप पर थको करें आप लोग में फॉर एग्जांपल पुश पॉप ये मैं ऑपरेशन है कोई करें पीक छु ब्याक ऑपरेशन सोन बगुन क्या गो इस आम तौर पर करें इज एम्प्टी ये वन क्या गो ये क्या कह ट्रू इज फुल अगर आप कोई दुनिया का ऑपरेशन आप करके we can perform a lot of operation on the stack. तो for example index 0 1 2 3 4 and 5 तो ये कंसेप्ट इनके टॉप को टॉप करा पॉइंट टू द टॉप एलिमेंट इस टॉप वेरिएबल अच्छो स्विच करा पॉइंट कटनस 5 दैट इज द साइज का 6 दैट इज द लास्ट एलिमेंट इस लास्ट साइज मैक्सिमम साइज इस पर इनके टॉप करा फॉर एग्जांपल push x किसी आर्गुमेंट करा पास आपको तो ये करो इंशाल्लाह इनसे पगा कोडिंग परवानी ताकि हम भाई आर्गुमेंट क्या हो किस किन से करा अंदर कॉल इनसे इस करान चाहिए पुश फंक्शन तो आर्गुमेंट किस किन का पास ओके तो if I have to remove 7 then what I can do I can कैसे बकराएं तो फर्स्ट बकर कर पॉप ऑपरेशन पॉप कर 5 क्या है लास्ट इसमें से 5 you can pop operation. That means I can delete the last element only. If I want to delete the element, I can delete the element at the top of the stack. Go back top. You have top kasi. You can delete one. Go 7 guys delete. One is top kasi minus. Top go plus. You can kasi minus. Go yours 5. 5 to top. I guess minus top one 4 square. And तक कर 6 delete top one. गस माइनस बी ये वाटी 5 पे पास कर 4 डिलीट टॉप वाटी 2 पे ठीक है रोज माइनस गसान तो ताने जो टाइम टॉप बने इक्वल टू -1 जो टाइम टॉप बने -1 आई पत वाटी यतनस टॉप गछि -1 तो आई पत वाटी यतनस टॉप गछि 0 ये टॉप करा 0 पास गछि बे टॉप गछि -1 गो यम सा टॉप गछि इक्वल टू -1 वाटी टाइम सॉट एम्प्टी ऐसे ठीक मगर अस्टोरी सिग्री कि लास्ट एलिमेंट इज पुश ऑपरेशन ट्रायो पुश जो वन लास्ट एलिमेंट क्या ट्राई में 7 क्या गॉट में 2 पात्रोम 3 पात्रोम 4 पात्रोम 5 पात्रोम 6 लास्ट एलिमेंट को में 7 गो लास्ट एलिमेंट इसमें आपने ऐड कोड या इंसर्ट कोड या पुश कोड सो 7 मगर यम साथ में रिमूव कर एलिमेंट यम साथ में डिलीशन कोड गॉट एलिमेंट इसमें एमोज द्राव सो क्या द्राव 7 गो पॉप तीन साथ में कोड so it was 7 go attempt to basically the element which has been inserted last the element inserted last is the element deleted first क्या use element stack का शी ब्याक principle ब्याक rule so element use last is insert गसान तो stack में ये deletion करने so element से करने गोडनेस करे go the element inserted last is the element deleted first go so the Bjark principle and it is based on the principle of last in first out LIFO last in first out ठीक है वो the element which has been added last the element added last is the first element to be deleted last element you insert करान चाहिए so ये deletion करान चाहिए popping करान चाहिए so first element that can be popped you say pop करान चाहिए go last element try में अपनी 7 ये साथ में delete क्यों करूं मैं क्यों करूं सुई 7 वापस मैं अपनी 6 पे इस दयम प्रिंसिपल गॉडने प्रिंसिपल छ आती है इंसर्शन ते डिलीशन से कसा आकी साइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक तो दयम प्रिंसिपल छ ये कि यह मतलब इंसर्शन डिलीशन is based on the operations of the stack is based on the principle of the LIFO last in first out यहां है को ब्याक रखते हो first in last out कित गोती first in last out क्या फर्स्ट गयो या फिर 2 in गॉडने ट्राई में स्टैक्स में 2 but ये लोग डिलीट कर गॉडने ये पत वो लास्ट ने go it is based on the principle of the
FILO या LIFO, last in first out या first in last out. Okay, are you getting? Good. Go. You state this is not an actual representation of the state. This is only the logical representation of the state. अब मैं थोड़ा real life पे आऊंगा. Let's come to the real life. Real life में क्या मन बात मिसाल है जिसका easily समझ. So वो ये ऐसे CD stand, the CD था वहाँ Okay, are you getting? CD stand बस तरावन गवर्नमेंट CD आसमस. पांच तरावन दयम CD, त्रेयम CD, ژوٗرِم CD, pūnٛژِم CD, شیٚیِم CD. ठीक छा? ये छा first CD, second, third, fourth, fifth and sixth. For example, वो छा मैं CD करें fourth CD पे में ज़रूरत. I want to CD for fourth. मगर ژوٗرِم CD करने बूझू छिपे गॉड sixth तुलिन थोड़, fifth तुलिन थोड़, आधा बा fourth करें. गो आई मतलब गो यस में लास्ट अपने CD ट्राई सर sixth CD. ओके तो यस में पात आई मस कालिंग छ चाहे अगर ये त्यास कालिंग ये यस में गॉड नहीं तो मैं सिट कालिंग मगर मैं सब पर आई मुझे रिमूव कालिंग कॉस्ट लास्ट चीप तुलिन थोड़ आ गॉड तुलिन आ पात बई बई CD करे यस मतलब सारी फल बोन CD छ तो सह बा अद नेबर करे गो 6th CD तो द लास्टस क्योंकि मैसेज जरूरत फोर्थ ये मैं मिस कालिंग छ गॉड नेक्स्ट में कालिंग 6th नेबर या शेमिस नंबर पे सीरीज है सॉरी तवे गो इट इज बेसिक में लास्ट इन लास्ट चाहिए फर्स्ट आउट व्हाट नट आई है दिस इज द फंडा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ओके तो दये वन में इंसर्शन डिलीशन कुछ या पर तो पेट में एनी किन बतावा ये मिया अति हो आखान या पर बे सीरी बुनसावा अपर चूज करन दैट मींस इंसर्शन के साथ अपर डिलीशन के साथ अपर दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल of the data structure stack. Okay. So, that example, for example, is gari asan plate is asan. So plate it can throw plate. After this piat. Chathawan. Pat asan plate is zurat. This goes plate throw into lagi plate asan. Pat is kana ach plate zurat. Us kya karo? You godnu plate में लोग मत pat lajom ये. Pat in zurat chu asan plate. Bus tuan pitching plate है वो. Pat tuan time by this plate. Pat tuan time pat plate. Time pat plate. Get that choose last parade patrawan choose. Switch godnu parade is bakana. Choose. Go last in, first out. Ya want to fitness first in, last out. This first sayo you want, so the last back in it. This is the basic principle of stack. Okay. This is a real life principle. Yeah, example of stack. Much सवाल no one तीन अगर क्योंकि अच्छी बच्चे कोडिंग आकारी पुष्ट पास अमत समझ आई हो वो मन द ऑफ ऑन नेटनेस इज अ स्टैक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक कैन बी कंटेनर ऑफ चैसी पुश लो जोन आपने पुश एक्स पॉप छन जरूरत आर्गुमेंट पास करने की क्या एक्सेस की क्या जी बवन ये वासे बोन टॉप तो अच्छन जरूरी पातो कुछ गार्बेज रोजान तो गार्बेज वैल्यू खत केयर करान कि साहब अपन करते हैं ब्या फोन में पीक होने में ब्या फोन में इज एम्प्टी तो ब्या फोन में इज फुल these are the functions these are the basic operations you must get and discuss क्योंकि पुश वन में एलिमेंट असमस त्राउन तचेस वनान पुश ऑपरेशन पाप वन में एलिमेंट एमस करूं क्योंकि ये तो में आर्गुमेंट तो में असमस एक्स करा पास आर्गुमेंट इन द पुश फंक्शन करे कॉल तो असमस आर्गुमेंट ऑफ एक्स टिकट में उसका वैल्यू त्राउन दैट मींस एक्स में भी एनी वैल्यू इंटीजर 2 3 4 बेसिकली ब्लॉक चीज असमस याद कि स्टैक्स मतलब कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप्स इसके एरे है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स तक मुझे कहना इंटीजर ये character float w अति किस्म के ग्रुप इसे किंचे इते stack is there also the collection of the similar data types बाहर के बतलावा एक लाइक इंटीजर पत्रावा कैरेक्टर a पत्रावा float तो डेसिमल पॉइंट या क्या पत्रावा वो नहीं हो सकता तो क्या है इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप्स what is a linear it's a linear data structure by we can store only a
सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट्स अकी किस्म डाटा टाइप्स हेको स्टोर कर तो सो यहाँ पर इंटीजर फॉर एग्जांपल मे वो यस ये पुश फंक्शन अम त्रावान एलिमेंट्स मे हुतन कोर पॉप से करान रिमूव तो पीक क्या करान वुचु क्या करान पीक फॉर एग्जांपल साइज ऑफ स्टैक मे 0 1 2 3 4 5 and 6 वो साइज में 7 साइज में 7 क्या 1 2 3 4 5 6 and 7 क्योंकि ये एम्प्टी स्टैक मुझे स्टैक कहीं इट इज एम्प्टी स्टैक ओके तो एम्प्टी स्टैक क्या करान टॉप मे वो तम साथ एम्प्टी स्टैक यम साथ टॉप आसि -1 दैट मीन्स अस एज्यूम करान इस टॉप छु सु यम 0 बोन कटन हियर बिलो 0 top equal to यम साथ top to -1 आसान तम मतलब go empty state. If top equal to -1 then the state is empty. Then state is empty. यदि stack empty आसान we cannot delete element. We cannot perform any deletion operation on empty stack. तिकाज delete मतलब वो युस अफ मज element आ सु करो delete सु करो remove यदि खाली छु अस हको न remove करित किहिन के तख मुछन किहिन यदि किहिन के remove क्या करो ओके तो top equal to empty यम साथ ये फंक्शन चुस करान is empty यम साथ is empty फंक्शन कॉल करान ये करान चेक whether top equal to -1 कि top मा छु -1 अगर इस top वैल्यू top अस मुझे ओ सो अस -1 बराबर के top यम साथ बुझ करो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट प्रोग्राम यम साथ बनाओ ततन तरह फिक्री फंक्शन में ततन तरह फिक्री कितकिन छु कोडिंग में जब कोडिंग करो ततन तरी ज्यादा पांच फिक्री तो या ये तो थोड़ा अमिच वर्किंग कितकिन छे गसान थोटिकल पार्ट ऑफ द स्लाइड टॉप इक्वल टू -1 अगर टॉप वाज -1 ये ट्रू कराने रिटर्न is empty return is true when the stack is empty. If the stack is empty, that means if the top variable is equal to -1, if the top variable is -1, then we can say that the stack is empty. And this function is empty return is true. इसे करना टाइम सा return true. वो अगर न योस कहीं for example जब हम सोचते हैं 5 आप मुझे 5 तेल से ये function करना मेरे return false. वो टाइम मतलब वो टॉप आसानी क्या तेल -1 साचा तेल गो इंक्रीमेंट वो प्लस प्लस या से तेल 0 वो टॉप आसी 0 अगर टॉप वाज अदर देन -1 0 1 2 3 तो this is empty return is true yes ये फंक्शन से अगर ये कॉल करी ना और ट्रू हम मतलब अगर ट्रू आई एम कोर नहीं फॉल्स सॉरी अगर वो करी फॉल्स क्या है अगर ना ये -1 वाज की तेल करी फॉल्स अगर ये -1 वाज टॉप वैल्यू तेल करी ट्रू गो चूंकि वंकस 5 मतलब गो टॉप आस खोतन कतनस जितना 0 का इस टॉप वेरिएबल इस करान कस पॉइंट 0 दैट मींस न इस 0 न कि -1 तो ये कर इज एम्प्टी करी मैं सारे रिटर्न फॉल्स ओके वो फॉर एग्जांपल पुश ऑपरेशन के एक्सेप्ट करना काम पुश बले का है एक्स करबा पुश 2 ये फंक्शन आई ना तो 2 पता है ब्या फंक्शन push 3 network with 3 dark function push 4 network with 4 push 8 network with 8 dark function we call push 9 the 9 element network 9 push 10 yak with 10 push 20 yak with 20 go and your equation kihin go use top showing के top कराऊं के point to this top variable that means size -1 okay top is sort of size -1 is when top is equal to size -1 हो जाओ 0 समझ गए ये -1 तब तक बोले empty true अगर top और size -1 को मतलब अगर ये top variable हो तो में कतनस size खुद आ कम size जो 7 that means 6 suspect तो क्या जी उस करान index start from 1 तब वैल्यू 6 आसानी एलिमेंट है बराबर 7 गो अगर टॉप वाज करंट साइज -1 पॉइंट टॉप हम जो वैल्यू साइज -1 दैट मींस ये द नोस वैल्यू 6 या कंडीशन में के साइज 7 है तो 6 हो तेल से यस इज फुल है ये फंक्शन अगर हम साथ कॉल करती इसे करंट ट्रू या ट्रू मतलब वो ओवरफ्लो कंडीशन so now say hakak no when after you cannot insert any element further when hakak no I'm can't element at insert that means overflow condition shall be return
Go true in Sati that is overflow. Overflow I'm going to say I'm never catching joy. Actually, Sati element and Kotra joy. So what you must get top size minus one, and that means lost of what muta, sorry element of enter, sorry element of insert. That means yes is full check, it will return true. One agar you also your size minus 7 come, it is less than size minus 1. Top was less than ya barabar size minus 1. No, less than. Agar size minus 1 come was size catch 7 minus 1 क्या 6 and nish come was then this is full will return true. Tell can return ये क्या? Sorry false. Tell can return ये false. Go yes full function क्या? इसमें true तम साथ करान ये साथ या से stack आसी full. तो is empty से तम साथ करान में true return ये साथ stack आसी empty. खाली. That means underflow condition empty के underflow क्या है ये I'm bonus है कुछ पत्ते delete करे कि तो या से full गई या से overflow. I'm allowed to sacrifice ako si enter kaya. Iga yung function. Treya, biak function one me. Actually yo hai. Biak one me. Push the gay, pop the gay, peak. Peak catcher. Peak is a function. Yang one of top function sa biak now. Top function. Peak ya top. Peak catcher karan aise. You just guess. Top fitness karan point. ठीक है. Peak catcher karan. Peak se return topmost element of the stack without deleting that element. What is the function of the peak? Peak is called catcher. The peak function, when called, it returns the topmost element of the stack without deleting that element. इसी का माना अगर मैं पूछूं कि तो for example, it's a top element. I can क्या value? If I want to know the value of the element that is present in the topmost location of the stack. That is present at the top location of the stack. You can top to Titan. Whose value is present? Source me wuchun. If I want to know which value is present at the top of the stack. I can current top side. I can whose value to then such the current called peak function. Peak, yeah, top function. Good top function is going to I'm saying which top is location chair. I can whose value to I can 20. I can 20. Delete without deleting that element. Push the current return. Push the current. Pop the current return the element. Agar मैं आज पूछूं pop, what is the element? पास करो minus. Because see out, stack of 6 ये पास करो minus. मगर बहुत बर element मर सुबह सुई delete push pop function. मगर ये सी peak function ची. I'm saying delete it can only returns the topmost element. Which value is present at the top location. This top location is top issue. I will push value to such may return without deleting that element. But element should delete. These are the basic functions of stack. Yes, stack data structure. Sure. Operation is performed on stack. These are the basic operations which one can perform on the stack. I'm allowed to display element current. 2, 3, 4, 5, 20, 10, 9, 8, 4, 3, कुछ element छु तीन function ते हकोस आत्तक कर तीन operation ते हकोस आत्तक कर तो mainly examples की बात हम चीज़ आत्ता नहीं वन push and pop operation मुझे तन तो राइट फिक्री कि उसे data structure stack छु it is based on the principle of LIFO last in first term. That is the element which has been inserted last is the first element to be deleted, is the element that is to be deleted first. Go the element that is inserted in last is the first element to be deleted first. It is based on the it is based on the principle in which the deletion and the insertion takes place only from one end, and that end is called top end. That's it. Top deletion से कराते insertion से करान तो आप मुझे operation करान we can perform the various operations on the stack, but the two basic operations, the push and pop. What is push operation? The push operation, it is a process of inserting element or adding element in the stack, into the stack. Insert element into the stack is called push operation. We can insert the element into the stack only from the top end of the stack. ठीक है किसके चुका सा मैं वो नीचे प्लस पे वन करूँ टॉप फिर रोड खासूं तीन सौ एलिमेंट कारण तो पॉप वन में it is the process of removing element from the stack, deleting element from the stack. The operation by which we can delete element from the stack, the operation by which we can remove element from the stack is called
pop operation. The peak peak function returns the topmost element of the state, topmost element without deleting that element. Delete karna is return current and is empty when this function returns true if the state is empty. That means if the top is equal to -1. If top was -1, it returns true. Otherwise it returns false. The is false, is full. This function returns true if the top is equal to size -1. If size -1 but that is maximum size -1 this function returns true. So these are some basic operations of the state. Inshallah, in next video we are going to implementation, actual implement. We are going to discuss the actual implementation of the state data structure. तो जल्दी में करो अमिच थोड़ा applications of state. अस कटिंग आम तौर लगाने जरूरत. Applications of state. Applications of state. Number 1, reversing a word or string. For example, actually reverse a word. For example, actually A, B, C, D. And we want an output from the D, C, B, to A. Reverse current. This reverse current, you say data structure implement current, use current. That is the state. For example, how we get you know in state. This is a state of word 0, 1, 2, and 3. For example, let's insert A, okay, B, C, D. Go top sweetness, insertion करने A, B, C. ये तो remove कर, what क्या कर D, पद क्या कर C, पद क्या कर B, पद क्या कर E. पूछो, yours A, B, C, D, मेरा D, C, B, A. इसके से हकान करे इस्तेमाल implement करान चाहिए. Application of state we are going to use this state in reversing an array. Reversing a string or a word. Okay. Number 2, undo mechanism in text editors. For example, we are using this state in performing the undo mechanism in text editors. Yim text editors, text yim satay काम करान छु कुन तिम Word's मज या Excel's मज अश लेखान का चीज उस का फंक्शन का उसके लेखा वन या कुछ हो which is उस लेखा इसके ना ठीक है पता है ऐसे अश गलत गस उस undo करान से redo ने undo उस control Z से दबावन गोश का ये delete पाची का delete पाची को तटन चीज अंदर implementation का सान से times that is also performed with the help of the state. तटन चीज करान उस इस्तेमाल तटन चीज करान इस्तेमाल state. So next then you take programming करान से उसका compiler करान compilation दोरा for checking the balance of parentheses check करने खातिर in compiler उस आसान छु क्योंकि ये इस प्रोग्राम का लेखान छु उस तक करान opening brace closing brace अंदर तिम नम practice लेखान या parentheses लेखान तिम क्या जी प्रत्येक कोई opening brace के साथ closing brace ये तिम start और closing brace यम check करने खातिर कि क्या ये तो opening braces छे तिम छे add particular position पे तिम सही position पे छे कि right position पे छे कि ना that तिम check करान जो compilation के साथ compiler के साथ convert करान छु तम साथ check करान इन बराबर तो जैसे checking के साथ that has also be done with the help of this data structure. The stack stack के साथ इस्तेमाल ताकि checking the balance of parentheses. The balance parentheses check इनका बराबर balance में चाहिए जो हुआ check opening चाहिए तो सब closing थी तिम right place पे तो switch के साथ ऐसे with the help of the stack. Next, in recursion function, recursion ये तो इसका recursion या function का साथ है ताकि जिस कारण इस्तेमाल से recursion go function call is off function कराने call से कराने mix पर call से base पर in recursion continuously जनिस गसान again and again का साथ function call ताकि जिस कारण इस्तेमाल को state data structure. These are some basic functions,
basic applications of the stack data structure. The basic stack karan am sat istemal yem sat conversion chis karan infix to postfix to prefix ya vice versa it is or conversion karan che infix expression karan postfix expression में convert या postfix expression karan che वापस prefix या expression में convert तो second चीज karan इस्तेमाल कोई data structure stack data structure inshallah so karo inshallah next video asan tak mes karo to your theoretical part of the stack data structure inshallah in next video we are going to discuss the its implementation using arrays and linked list. Okay, bye. See you.